morning students, myself Abhik Roy from the mathematicsicon channel, your mathematics teacher. So in this lecture just we are going to discuss the straight line chapter for class 11. Okay, and I think from the straight line chapters the various discussions were there in my channel that you can see. The various lectures were already provided to the students from the straight line chapter as well. Okay, so in that lectures I think the various concepts and various questions were solved, and this lecture is very important for the board standard exams, for the entrance standard exams. Okay, so in the last lecture I think the slopes intercept form of a straight line, this formation was discussed. Okay, slope intercept form of a straight lines, and so far I know that I had drawn a figure also. This part is C and this part is theta, that means positive x-axis. Then the formation of the straight line will be y equals to mx plus c, where m equals to what? Tan theta. Okay, so this is the slope intercept form, and C is what? The intercept on y-axis. Okay, so this is called the slope intercept form. So regarding this formation, just we are going to solve different questions. Just write the first question. Okay, find the equation of the line whose y-intercept is 4. Find the equation of the line. Find the equation of the line whose y-intercept is 4 unit. Okay, and perpendicular to the line joining, and perpendicular to the line, and perpendicular to the line joining 2, minus 3, 2, minus 3 and 4, 2, 2, minus 3 and 4, 2. Okay, so here here you can see you need to find a straight line equation. Okay, whose intercept on y-axis is 4. Obviously C equals to 4. So just write here C equals to 4. Okay, now if you want to use this formation, then I think M is required here. M means slope is required. So how can you get the slope here? The slope is not given directly. Okay, but link is given. By using this link, easily you can find the slope of the required line as well. Okay, just you can see here the required line, that is a line which is going to be found, the line equation. Okay, this line is perpendicular to the another line. That means if you draw a figure, this is the given line whose joining points are 2, minus 3, 4, 2. Okay, and it is the required line. It is the required line, and this line intercept is what? C equals to 4. And now perpendicular. Okay, so that means if you find the slope of this line, so by using this perpendicular property, m1 into m2 equals to minus 1, ये property use करके second line का slope भी निकाल सकते हैं यहाँ पर. देखो here, since required line perpendicular to the another line joining 2, minus 3 and 4, 2, then slope of other line क्या होगा? देखो इस लाइन का स्लोप क्या होगा निकाल लेते हैं. m1 नाम दे देते हैं. m1 equals to y2 minus y1, that means 2 minus of minus 3 by x2 minus x1, 4 minus 2, that means 5 by 2. so ये होगा इस लाइन का स्लोप, that means यहाँ पर m1 equals to 5 by 2 आया. ओके, अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर. अगर दो लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट शुड आई टेक? m1 into m2, that means their slopes multiplication will be minus 1. So just write this line, since m1 into m2 equals to minus 1, so m1 value is 5 by 2 and m2 is required. M2 actually till now we don't know the value of M2.
just you need to find the m2 value. M2 equals to what? Minus 2 by 5. So that means this slope is the required line slope. So this is the required line slope. C is known. So equation of the required line. So equation of the required line. So equation of the line y equals to mx plus c. So y equals to mx plus c. That is the equation of the required line. Answer. So that means if you want to use the slope intercept form of a straight line, then you need to know the value of the slope of that particular line, and the intercept on y-axis length should be given or should be known as well. Okay, so if you know these two things, then I think you can easily use this y equals to mx plus c formation, and easily you can solve this type of questions. Okay, so whenever this y-intercept will be given, y-intercept, that means a cutting piece, the length of the piece which is cut by the line on y-axis, it will be given in the question. Okay, just when you will see this type of structured question, then you will use y equals to mx plus c formation as well. Okay, just write this next question. Just go for the next question. Find the equation of the straight line which makes an angle. Find the equation of the straight line which makes an angle 15 degree with positive x-axis. Just write the equation. Find the equation of the line. Find the equation of the line which makes 15 degree with positive x-axis. 15 degree with positive x-axis, and cut the intercept of length, and cut, here you can see, cut the intercept, okay, cuts the intercept on negative y-axis is 4. That means here you need to find the equation of a straight line which makes an angle 15 degree with positive x-axis. That means I think a straight line is making an angle 15 degree with positive direction of the x-axis. That means using this angle we can find the slope of this line. Okay, so that means here just x-axis, y-axis, and this is the line, and this angle is 15 degree. That means using this angle you can find the slope here, and this intercept, actually according to the question, this intercepts is on the negative y-axis. नेगेटिव नीचे की तरफ है. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर थोड़ा फिगर को थोड़ा रीअरेंज करूं, दैट मीन्स कुछ इस तरह का फिगर होगा. ऐसा ये 15 डिग्री है कि नहीं, और ये जो है ये 4 यूनिट होगा. नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है ऑब्वियसली. सो दैट मीन्स हियर C equals to -4 unit. Because negative on the negative y-axis, okay, the intercept was 4. That's why C equals to -4 should have been chosen. And angle with positive x-axis, so slope equals to 10-15 degree. Slope means m. M equals to slope equals 10-15 degree. Now you tell me 10-15 degree. 15 degree value is not known. Directly we can't say the value of this 10-15 degree. 10-15 degree. That means how can I find the 10-15 degree value? Yes, we have a link to find the 10-15 degree as well. Okay. And what is the link? Actually, for solving this kind of questions, 10-15 degree, okay, 15 degree, then you need to know the trigonometrical concept of class 11, and that is the compound angle formulas. Compound angle, just you will see in the trigonometry chapter, compound angle chapter is there. In that chapter you will see the compound angle properties, and what they are actually, what is the meaning of these compound angles. That means 10-15 degree
That means this 15 degree can be expressed in such a way where the two different angles will be used in the form of positive or negative as well. How? Just you can see 15 डिग्री को हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30. तो बोलोगे सर 15 डिग्री को तो हम लोग 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं. लिख सकते हो एज यू विश. सर 15 डिग्री को तो हम लोग 17 डिग्री माइनस 2 डिग्री भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. बट आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे जो भी एंगल्स आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो सब एंगल्स का वैल्यू आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर जैसे 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिखा. क्यों मैंने लिखा? 45 का वैल्यू भी पता है, 30 का वैल्यू भी पता है फ्रॉम द चार्ट. एक्चुअली आप 15 डिग्री को 60 माइनस 45 लिखेंगे तब भी आप लोग यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. 60 डिग्री का भी वैल्यू पता होगा, 45 डिग्री का भी वैल्यू पता है, यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब 100 माइनस 85 करेंगे. 15 डिग्री तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 85. अब 100 का वैल्यू कहां से लाएंगे, 85 का वैल्यू कहां से लाएंगे, नहीं पता. तो दैट मीन्स कोई भी एंगल, इस टाइप का एंगल्स ओके आपको निकालना है, देन यू नीड टू यूज द कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास. ओके, कंपाउंड एंगल्स, दैट मीन्स combination of the two angles. That means you can express one particular angle by using the two different angles at a time. Okay, so here tan A minus B formula should be used. A tan A minus B, that means tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. ये होता है फॉर्मूला. दैट मीन्स फॉर्मूला को आप लोग लिखेंगे, लिख के रखिए साइड में. tan A minus B equals to tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. ये होता है ओरिजिनल फॉर्मूला. ठीक है, इसका ही यूज यहां पर हुआ है. सो दैट मीन्स यही चीज अगर हम लोग यहां पर यूज करें 45 माइनस 30, दैट मीन्स 1045 माइनस 1030 बाय 1 प्लस 1045 1030. अब वैल्यू पता नहीं है, कुछ ना कुछ तो रास्ता यहां पर निकालना तो पड़ेगा आपको, है कि नहीं. सो अब 1045 का वैल्यू भी पता है, 1030 का भी वैल्यू पता है. जस्ट फाइंड इट. ओके, निकालो. तो क्या होगा, m इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई √3 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई √3. That means √3 minus 1 by √3 plus 1. ये होता है स्लोप m. सो इक्वेशन ऑफ m का भी वैल्यू पता हो गया, c का वैल्यू भी पता है, तो बस इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, mx प्लस c. तो m के जगह में क्या यूज करना है, √3 minus 1 by √3 plus 1 into x plus c, that means minus 4. This is the answer. ओके, ठीक है. एंगल पता है तो एंगल अगर आपको पता हो तो स्लोप तो आराम से आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट -4. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट -4 एंड पैरेलल टू द लाइन joining the points. Find the equation of the line, find the equation of the line having y intercept -4 and parallel to the line joining क्या क्या ज्वाइन करके, joining 2, -5 1, 2, -5 and 1, 2. ओके, सो दैट मीन्स हम लोगों ने परपेंडिकुलर करके एक सेम टाइप का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पैरेलल है. तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट कितना है, -4. सो लिखो हियर c इक्वल्स टू -4 एंड रिक्वायर्ड लाइन, दैट मीन जो लाइन हम लोग निकालने वाले हैं उसको रिक्वायर्ड लाइन बोला जाता है. रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू द लाइन joining the points
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट है, 2, -5 एंड 1, 2। दैट मीन्स जो लाइन हम लोग निकालने वाले हैं वो लाइन पैरेलल है दूसरे एक लाइन के साथ। वो दूसरा लाइन जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 पॉइंट्स का। सो यहां पर स्लोप ऑफ अदर लाइन, निकालो, पॉइंट्स भी नहीं, y2 - y1, that means 2 minus of -5 and 1 - 2, that means 7 by -1, that means -7। तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड लाइन जो है, रिक्वायर्ड लाइन ये पैरेलल है अदर लाइन के साथ। तो अब 2 लाइन पैरेलल है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, 2 लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप्स इक्वल होता है। सो दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड लाइन होगा उसका भी स्लोप -7 होगा, क्योंकि पैरेलल है, क्वेश्चन में बोला गया है। अगर परपेंडिकुलर होता तो m1 into m2 इक्वल्स टू -1 वो लिखते, हम लोगों ने किया है ये क्वेश्चन। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू -7 बस। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन बस, y equals to mx plus c, that means y equals to mx plus c means -4. This is the answer. Okay? ठीक है। नेक्स्ट स्टडी, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 and slope m, then इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन x1, y1 पॉइंट से पास होता है और स्लोप यहां पर m है, देन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे, y - y1 m x - x1। ठीक है, ओके। एकदम पहले फर्स्ट डे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था। हाँ, फर्स्ट लेक्चर में y - y1 by y2 - y1 इधर x - x1 by x2 - x1 ये लिखा था हम लोगों ने। तो y - y1, तो एक काम करते हैं, y2 - y1 को डायगोनल ऊपर लेके जाते हैं, x2 - x1 और इधर x - x1। ये किसका डेफिनेशन है, m है ना, स्लोप है ना, ये स्लोप का डेफिनेशन है। तो दैट मींस x - x1, तो दैट मींस वही फॉर्मूला को रीअरेंज करके न्यू फॉर्मूला बनाया गया है और यहाँ पर m होता है स्लोप, x1 y1 कोई भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, सो दैट मींस आपको एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो आप लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसे लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो इसी टाइप के हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड the equation of the line, find the equation of the line passing through 2, -3 and angle 135 degree with positive x-axis. So find the equation of the line passing through the point this and angle 135 degree with the positive x-axis. So here the point, मतलब यहाँ पर x1 y1 given है 2, -3 and m equals to 10 135 degree। 135 डिग्री किसके साथ बनाया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप तो निकाल ही पाएंगे यहाँ से। तो 10 135, दैट मींस 10 135 डिग्री वैल्यू, इट इज नॉट नोन डायरेक्टली। ओके, जस्ट वी नीड टू फाइंड द 135 बाय यूजिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल।
okay, or by using this compound angle formula. Okay, so tan 135, that means I can write 180 minus 45 degree, I think. So 180 minus second quadrant in second quadrant tan is negative, and tan 45 degree, that is minus 1. So equation of the line, just use all the values in this formation. Y minus y1, that is y minus of minus 3, m means minus 1, x minus x1, that is 2. That means y plus 3 minus x minus minus plus 2, that means x plus y plus 1 equals to 0. X plus y plus 1 equals to 0. This is the required line equation. Okay? Fair. Next. Find the equation of the line. Which tan theta equals to half. That means tan theta equals to half. Directly the slope is given. Tan theta equals to half. Tan theta is what? Slope of a line. तो स्लोप यहाँ पर हाफ गिवन है, डायरेक्टली गिवन है. यहाँ पर स्लोप, नो नीड टू फाइंड द स्लोप हियर. ओके, डायरेक्टली इट इज गिवन. सो just write the question. Find the equation of the line for which tan theta equals to half. Tan theta equals to half. Find the equation of the line for which tan theta equals to half and x-intercept, question number 1, x-intercept is 4, y-intercept is minus 3 by 2. X intercept given है, y intercept given है, और tan theta equals to half, that means slope is given. Here m equals to tan theta equals to half, it is given. No need to find the slope here. Okay, so question number 1, here x intercept is what? 4. If a straight line x intercept, what does it mean? Actually, a line just like that. Okay, so this line x intercept is what? This length is 4. So I think this point coordinate will be, so x intercept 4 means this point coordinate on the x axis is 4, 0, and the slope, I think tan theta equals to half is given. Okay, so here the point 4, 0 by which the line passing through. Okay, right? So line equation is y minus y1, m means half, x minus x1. So y minus y1, this one 0, half x minus 4. That means twice y equals to x minus 4. That is x minus twice y minus 4 equals to 0. This is the required line. Okay. For the second question, for the second part, y-intercept is minus 3 by 2. That means this y-intercept is what? Minus 3 by 2 means negative y-axis के ऊपर ये इसने इंटरसेक्ट किया है. तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या होता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देके लिखो. क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग. 2, y-intercept is minus 3 by 2. दैट मीन्स फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग. तो ऐसा कुछ है. सो ये जो लेंथ है ये 3 by 2 है, बट नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर है. दैट मीन्स ये minus 3 by 0,
0,-3/2 होगा, है कि नहीं? इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट -3/2 दिया गया है, सो y इंटरसेप्ट -3/2. ओके, सो द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,-3/2. ठीक है, अब y इंटरसेप्ट दिया गया है, स्लोप भी पता है, हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज y = mx + c. c is -3/2, m is half. Directly you can get the answer. While that means since we are solving this exercise only for the slope point form, that's why just we are solving this thing, solving these questions in this form as well. Okay, point on y axis 0,-3/2 and slope m equals to half. So equation y minus y1 m x minus x1. Okay, so y minus y1 means क्या होगा? -3/2 half x minus x1. That means y plus 3/2. ओके, और इधर हाफ x. सो यहां पर हो जाएगा 2y + 3 और इधर x. तो यहां पर x - 2y - 3 = 0. This is the required line equation. Okay, so this type of questions are very very important for the post studies. Okay, so you should solve this type of questions very smartly with proper attention. Okay, now the next question, the perpendicular from the origin. Next question जाओ, perpendicular from the origin. Next question, perpendicular from the origin to a line meets at the point. एक पॉइंट में मीट किया है, पॉइंट -2,9 and find the equation of the line. Okay, and find the equation of the line. अच्छा, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है. That means ऐसा कुछ फिगर होगा, ये ओरिजिन है 0,0. अब एक लाइन ऐसा है, तो ये जो लाइन ऐसे जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये -2,9 है कि नहीं? That means परपेंडिकुलर बोला गया ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. That means ये है परपेंडिकुलर. ठीक है, एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर निकला है जो दूसरा एक लाइन है उसको मीट करता है, मीट्स एट द पॉइंट. किस पॉइंट में? -2,9 पॉइंट में. यही ड्रॉ किया है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. दैट मीन्स इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है. ठीक है, सो हियर perpendicular from the origin, joining the points. परपेंडिकुलर जो निकला है ना ओरिजिन से, कौन सा पॉइंट ज्वाइन करके निकला है? 0,0 एंड दूसरा क्या है? -2,9. सो स्लोप ऑफ the perpendicular line, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप क्या होगा? ठीक है, निकाल लेते हैं. 2 पॉइंट तो पता ही है, y2 - y1 9 - 0 by 9 - 0 x2 - x1 -2 - 0. That means this -9/2. So that means m यहां पर क्या मिला? -9/2. That means इसका स्लोप मिला -9/2. अब इस लाइन के साथ ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप
और इस लाइन का स्लोप इसको m2 ले लेते हैं, इसको m1 ले लेते हैं। दैट मींस ये m1 और m2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। ओके, सो सिंस, ऐसे लिखो, सिंस रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हम लोग निकालने वाले हैं, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू, नाम दे दो OP, परपेंडिकुलर टू OP, वेरी सिंपल। देन m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो m1 क्या निकला -9/2 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, दैट इज m2 क्या निकलेगा 2/9, 2/9। m2 किसका है, रिक्वायर्ड लाइन का है। देखो रिक्वायर्ड लाइन का जो है, इसका m1 रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है वो m2 निकला है, दैट मींस 2/9। अब रिक्वायर्ड लाइन स्लोप पता है 2/9, ये रिक्वायर्ड लाइन जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,9, तो बस और क्या चाहिए, तो लिखो। सो द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप क्या है 2/9 एंड पासिंग थ्रू -2,9 इज, बस फॉर्मूला यूज करो और निकाल लो, y minus y1 m x minus x1, that means y minus y1 m means x minus -1, that means 9y minus 81 और इधर twice x plus 4, बस अब तो क्या रीअरेंज करके ठीक तरह से लिख लो, twice x minus 9y plus 85 equals to 0. This is the equation of the required line. Okay, so this type of questions are very very important for the board standard as well. Okay, two lines, दो लाइन है passing through the point 2,3, two lines passing through the point 2,3, two lines passing through the point 2,3 intersect each other at the angle of 60 degree, intersect each other at 60 degree, 60 degree है intersect किया है। If slope of one line is 2, if slope of one line is 2, then find the equation of the other line, then find the equation of other line। मतलब दो लाइन ऐसा है, एंगल यहां पर 60 डिग्री है, इस लाइन का स्लोप क्या है 2 है, और इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है, ये गिवन है। तो इस लाइन का स्लोप, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 2,3, दैट मींस ये 2,3 पॉइंट जो है वो दोनों लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं। अच्छा, मुझे निकालना है इस लाइन का इक्वेशन। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो मुझे यहां पर इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2,3, तो इसका स्लोप मुझे निकालना है। अब इसका स्लोप क्वेश्चन में गिवन है 2, तो एक काम करो, we know that एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच एंगल क्या होता है, हम लोगों ने लिखा हुआ है tan थीटा, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, तो tan थीटा, थीटा मतलब तो 60 डिग्री है। अब m2 माइनस m1, तो ये m1 ले लो, ये m2 ले लो, है कि नहीं, तो m2 मतलब 2 माइनस m1, m1 मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका, ये m1 ले लेते हैं जो निकालेंगे हम लोग,
2 minus m1 1 plus 2m1, ठीक है। तो 1060 मीन्स √3। और एक काम करते, इधर अगर मॉड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस यूज होगा, 2 minus m1 by 1 plus 2m1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से m1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, है कि नहीं। तो ये प्लस √3 अगर यूज करें, 2 minus m1 by 1 plus 2m1, तो √3 plus 2 √3 m1 with the 2 minus 2m1. So that means m1 equals to 2 minus √3 by 2 minus √3 by 2 plus 2 √3, 2 plus 2 √3, ये है एक m1, क्योंकि प्लस माइनस है ना, 2 मिलेगा। तो यहां पर भी सेम माइनस √3 लेंगे, तो यहां पर 2 minus m1 by 1 plus 2m1, यहां से भी m1 का माइनस √3 minus 2 √3 m1, मतलब 2 minus m1, ये 2 minus m1 है, 2 minus m1। तो यहां पर जो है m1 ये 1 होगा, 1। सो दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, माइनस 2 √3 m1 प्लस m1 इक्वल्स टू 2 प्लस √3। दैट मीन्स यहां से m1 निकालेंगे तो 2 प्लस √3 बाई 1 माइनस 2 √3, ये है सेकेंड m1, ठीक है। तो 2 m1 निकला है। अब 2 m1 के लिए इसका जो इक्वेशन है 2 मिलेगा। सो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, सो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, सो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, बस y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 दैट मीन्स 3 m, ये ले लो पहला वाला, 2 minus √3 by 1 plus 2 √3 x minus x1। तो ये है कि इक्वेशन है। और y minus y1 2 plus √3 by 1 minus 2 √3 x minus 2, ये है दूसरा। एक ही लाइन का 2 इक्वेशन मिला। पोजीशंस यहां पर अलग अलग हो सकता है कि नहीं, इसलिए 2 इक्वेशन मिला। So these are all the important type questions for the board standard exams. Okay, so I think you need to solve this type of questions for getting the better marks in the final exams. Okay, so I think if you solve this type of questions, then day by day your knowledge and your everything, your confidence will be built up in your mind. Okay, so इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन चैप्टर फॉर क्लास 11। ओके, एंड जस्ट spread this message that this type of channel is going on. Just tell your friends, just share with your friends, neighbors, and everywhere. Just you should spread this message. Okay, so and convey this message to join the classes as well. Okay, if you like the videos, if you like my lectures, then I think just you should convey this message that please subscribe this channel. Okay, and push the bell icon as well. Okay, thank you very much for joining my classes. Bye and jai.